अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज़ द फोर्थ measure of dispersion and the most widely used measure of dispersion is the standard deviation. The standard deviation is the most commonly used measure of dispersion. It is fulfill all the requisites of a good measure of dispersion except that it is sensitive to एक्सट्रीम वैल्यू। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो है ये हमारे पास गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और यूजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ ही करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहते हैं इसकी रिक्विजिट्स जो हमारे पास हैं, मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू पे जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ एब्रीविएटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये SD से डिनोट होता है। S का मतलब है स्टैंडर्ड एंड D का मतलब है डेविएशन। A small value of the standard deviation for a data set indicate less frequent, while a larger value of standard deviation indicate more spread around the mean. लार्जर वैल्यू, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो स्मॉल आ रही है, इट्स मीन हमारे पास डेटा में वेरिएशन कम है, स्प्रेडनेस कम है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लार्ज आ रही है, इट्स मीन कि हमारे पास वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है अराउंड द मीन। हमारे पास जो मीन हमारे पास एक्स बार है उसके इर्द के जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। It is denoted by sigma, the lower case sigma of the Greek alphabets, and population case, and S is the sample case. S हमारे पास sample स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एंड सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर डेटा सेट हमारे पास पॉपुलेशन के लिए है तो हम फिर सिग्मा का वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। एंड S जो है वो हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे पास सैम्पल से हमने डेटा लिया है तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम S से डिनोट करेंगे। The positive square root of the average of the square deviation of the observation taken from the mean is called standard deviation. This is the proper definition. The positive square root of the positive square root लेते हैं and the average, this is the average, summation x divided by n, this is the average of the square, this is the square deviation of the observation taken from the mean, ठीक है, is called standard deviation. This is the definition, and mathematically we write the population standard deviation is sigma under root summation x minus mu whole square divided by n. We use the population mean, and in sample standard deviation we use the sample mean. Clear? So the only difference between the population standard deviation is population mean, and sample is in sample case we use the sample mean. Both हमारे पास बाकी same है. This is parameter and this is the स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारे पास पैरामीटर है, मींस पॉपुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर कहलाती हैं, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाती है, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम सैंपल डेटा से कैलकुलेट करेंगे, सैंपल डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, एंड ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर एंड दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। नोट दैट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर एस्टिमेट द पॉपुलेशन standard deviation when the denominator in the sample formula of size for standard deviation is n. However, the sample standard deviation does not underestimate the population standard deviation if the denominator in the sample formula is n minus 1. यूजुअली हमारे पास सम टाइम हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यूजुअली n-1 जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप कैपिटल जो n है उसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल n-1 जो है वो यूजुअली हमारे पास स्मॉल s से या कैपिटल S है, यहाँ पर स्मॉल s से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम n लिखते हैं और यहाँ पर हम n-1 लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैंडर्ड, बोथ आर द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, बट सम टाइम वी यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? सो व्हाट इज द वेरिएंस? द टर्म वेरिएंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय R.A. Fisher in 1918. It is denoted by sigma square in the population case and S square in the sample case, and is defined as the average of square deviation of observation taken from the mean is called the variance. And mathematically, population variance is equal to sigma square is equal to summation
x minus mu whole square divided by n. Mean variance standard deviation, you can say that the standard deviation is just take the positive square root of the variance. इसका आप अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेरियंस बन जाएगा. ठीक है, तो वेरियंस हमारे पास यूजुअली हम सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं. सिग्मा स्क्वायर इज द पॉपुलेशन वेरियंस एंड एस स्क्वायर इज द सैंपल वेरियंस. ठीक है, 1918 में फिशर ने हमारे पास वेरिएंस को इंट्रोड्यूस किया था और इसको यूजुअली हम सिग्मा स्क्वायर या सैंपल एस स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं. और वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द variance. Clear? So this is denoted by the sigma square and this denoted by the s square, and the small s square is denominator is n minus 1, so we denote it by small s square. And this is the population variance, so we use the population mean, and this is the sample variance, so this mean is the sample mean. Clear? So only difference between these two, and it's divided by population size and it's divided by the sample size. Variance measure the average square distance from the mean. हमारे पास क्या है, the average square, this is the average square distance from the mean. This is the easy or simple definition कि हमारे पास क्या है, average square of distance of mean. ठीक है, मीन हर एक ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज से हम डेविएशन लेते हैं, लेकिन हम स्क्वायर डेविएशन लेते हैं एंड देन टेक द मीन. ये हमारे पास जो है समेशन एंड डिवाइड बाय एंड दिस इज द मीन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूलाज. हमारे पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल डेफिनेशन, जस्ट टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड वेरिएंस आपको पर स्क्वायर यूनिट वेरिएशन देगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पर यूनिट वेरिएशन देगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसमें है हमारे पास है जो पर स्क्वायर यूनिट, मीन जो आप यहाँ पर जो आंसर आएगा उसकी यूनिट के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर जो आपको वेरिएशन मिलेगी वो स्क्वायर नहीं होगी बल्कि वो आपको पर यूनिट वेरिएशन देगा. ठीक है, तो standard deviation is the more appropriate measure of dispersion. So usually we use the standard deviation is the most commonly as compared to the variance. So it because it gives the per unit variation and it's a standard unit of measure of dispersion. ठीक है, तो usually हम standard deviation जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.